Hello everyone, good evening. May I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine. We are good to go so that we can start the discussion without any further delay. I'm really very sorry for rescheduling this session, but there was some technical issue because of this heavy monsoon which is going on, and along with that I'm even traveling for some medical reasons which was prevailing last week. The same is still continuing. So ठीक है, जो भी है क्लास होनी चाहिए. सो आई थिंक आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल, वी आर गुड टू गो. तो एक बार आप जल्दी से इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे कैन जॉइन अस लाइव एंड दे शुड बी अवेयर दैट दिस सेशन इज लाइव नाउ. एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीबडी शुड बी अवेयर दैट द सेशन इज लाइव. और आज के इस सेशन में वी हैव 3 important न्यूज़, out of which one is really very important to understand a very important concept related to your finance, especially for SEBI examination or especially for the PFRD and other examinations. This is going to be really very important. Okay, so if you have shared the link, if we are good to go and you want me to start with the discussion, give me yes sir, give me, just type Y in the comment section so that I can begin the discussion without any further delay. I hope audio, video, everything is fine. There is nothing wrong. There is nothing wrong. We are good to go. Just let me know in the comment section so that we can begin. जल्दी से मुझे बता दीजिए if everything is fine so that we can begin the discussion. Done? Chalo ji. Let's get started with the first news. The first news is related to Security and Exchange Board of India, that is SEBI. अब SEBI से कैसे ये न्यूज़ रिलेटेड है, क्या है इस न्यूज़ के बारे में, तो प्लीज़ पे अटेंशन. Before I discuss with the nitty-gritties of this particular news, let's try to decode the news title. SEBI proposes mutual fund only portfolio management services. सबसे पहली चीज, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड पोर्टफोलियो? सी, जो पोर्टफोलियो है इट्स अ वेरी जनरल टर्म. बहुत बार आपने सुना होगा मॉडल्स, एक्टर्स, दे कैरी देयर पोर्टफोलियो एंड दे से कि भैया ये मेरा पोर्टफोलियो विच कंटेन देयर images, which contain their pictures in different poses and different attires and whatnot. So portfolio is used in different ways, but whenever we use the word portfolio with respect to investment, or whenever we use the word portfolio especially with respect to share market, इसका मतलब क्या है? The share market investment इन दोनों के context में portfolio is what, sir? It is the combination. It is the combination of your investment details. It is the combination of your investment details. For example, there is an individual and this individual has invested in different companies. He has invested in different instruments that could be debt instruments, equity instruments, as well as government securities. So when we combine them all and we see them collectively as your, or as individuals total investment, or as individuals total total investment in the market, or as individuals total worth in the market, we call it as portfolio. बेसिक मतलब यही है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो पोर्टफोलियो है इसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सर आप भी जानते हैं व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग योर फंड्स इन द शेयर मार्केट, obviously you are investing your hard earned money, and if you are investing your hard earned money, you don't want to lose that money, firstly, and secondly you want good growth, you want good return on your funds, on your investment. So in that particular case you need to manage your portfolio pretty well. Now the question over here is, so what do you mean by the word management? See, if you ask me, the word management basically means the process through which
the process through which decisions are taken, where to invest, when to disinvest, all these decisions, whatever are being taken, they are included under the category of management services. Now, what I'm trying to say, please pay attention. He said, एक individual है, he has a portfolio, but he is an engineer. तो उसने अपने हिसाब से कुछ पैसा इन्वेस्ट तो किया. अब हो सकता है कि इसने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया, I'm not saying only in share market, he might have invested the funds in gold, he might have invested the funds in real estate, and then he has invested the funds in the financial instruments through the share market or in the stock market. अब इंजीनियर इज विटनेसिंग कि भैया मेरे पास अपना काम बहुत है, मुझे वो काम करना और मैं अपने पोर्टफोलियो को ऑन रेगुलर बेसिस चेक नहीं कर पा रहा, ऑन रेगुलर बेसिस रिव्यू नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से आई हैव लॉस्ट मेनी opportunities where I should have sold out one of the share and purchased the other one because that was a good call, because that was a demanded call in the market. The moment I realized कि भैया ये नहीं हो पा रहा, then what will I do? I will go to a service provider. That service provider is responsible for the same service. That service provider is responsible to manage my portfolio, or this portfolio management services are the services which are basically managing the portfolio in order to maximize the profit and minimize the loss. मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस जीरो होगा, प्रॉफिट हाईएस्ट होगा. ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो प्रोन टू मार्केट रिस्क, बट इट विल बी मच बेटर in comparison to an individual which we have taken in our example, the engineer who has no information, who has no much knowledge about the share market. So it's better you go to the portfolio manager, and the portfolio manager will be managing your portfolio as per their understanding, as per their call, as per their I would say insights with respect to the market. Now, earlier portfolio management services was provided not only for equity share investments, but also for the debt instrument investment, but also for the mutual fund investments. But now, if an individual has invested in mutual funds and the investment has been done in different mutual funds, again with the motive of maximizing the profit, minimizing the loss, but due to the volatility in the market, you cannot hold with a single combination of mutual fund. Again, you need someone to manage your mutual fund schemes investment as well. So now SEBI has allowed that the portfolio management services will be provided. Portfolio management services will be provided only and only for your mutual fund portfolio management as well. Mutual fund क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब है कि सर मान लो कुछ लोगों ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया एंड दे आस्क्ड पब्लिक टू इन्वेस्ट. नाउ पब्लिक इज इन्वेस्टिंग in this particular fund, and the collected fund under the trustee will be invested in the share market with the same motive of maximizing the profit, but it comes certain times with maturity, or it comes with the nature that whether it is open mutual fund or maybe closed mutual fund where you can invest whenever you want, where you cannot invest whenever you want. So there are different categories you might be knowing. But mutual fund होता क्या है? So mutual fund का मतलब है rather than investing in a particular company shares, you can invest in a fund which we call it as mutual fund. So in a mutual fund, your entire amount which you are investing, it will be diversified between different equity instruments, debt instruments, as well as the other financial instruments, other financial assets which are available in the market. Again, the motive is same: maximize the profit and minimize the loss. Now you have multiple mutual fund portfolios. You want your multiple diversified portfolios of mutual funds should also be managed. Then SEBI says yes, this is allowed and this will be allowed. SEBI says yes, this is allowed and this is allowed, and this is allowed under what? So it is allowed under the portfolio management services. This is allowed under portfolio management services.
Is this point clear, everybody? If it is clear, just give me yes, sir. डन डन डन। ठीक है जी। अगर ये समझ आ गया तो फिर समझो कि कुछ बचा ही नहीं है। इफ दिस पार्ट इज क्लियर, दैट मीन्स नथिंग इज लेफ्ट। व्हाई आई एम सेइंग नथिंग इज लेफ्ट, उसका रीजन है। उसका रीजन बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि अब जो बचा है दैट इज समथिंग which we can easily understand, which we can easily remember. So the first point says that, he said, if you want your portfolio, if you want your portfolio to be managed, then there is a condition that your minimum investment for regular portfolio management services is 50 lakhs, which means if your portfolio size is of 50 lakhs, if your portfolio size is of 50 lakhs, then in that particular case, you can go and enjoy the services of portfolio management services. एक बात बताना सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए थे? सर, डोंट यू थिंक देयर वर सम चेंजेस डन हियर? तो ये आपके लिए होमवर्क है, डू चेक कि क्या कुछ चेंजेस हुए थे, वर दोज चेंजेस वर जनरल और दे वर स्पेसिफिक, चेक करना, वरना मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट if you want your mutual fund portfolio to be managed through the portfolio management services, then in that case your portfolio size should be at least 25 lakhs. If your portfolio size is 25 lakhs, it can be managed under portfolio management services, but if it is in general portfolio, then its size should be minimum 50 lakhs. So what is the aim? Sir, aim is very simple: to expand access to professionally manage investment services. Now, if you want to run, if you want to start, if you are owing a portfolio management services firm कि जो आपकी services provide करता, आप अगर उस firm को hold करते हैं, if you are holding that company, then in that case minimum net worth requirement for new mutual fund portfolio management services applicant proposed to be reduced from 5 crores to 2 crores. In general, portfolio management services के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं, then your minimum net worth should be 5 crores. But if you're investing only for mutual fund, if you're investing only for mutual fund portfolio management services, then you can run or you can initiate with an investment of 2 crores also. ठीक है जी। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है नेट ओन फंड की वो भी कम है, और जो रिक्वायरमेंट है पोर्टफोलियो साइज की वो भी कम है। ये दो चीज ठीक है जी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। पहली, 50 लाख से कम होकर 25 लाख, 5 करोड़ से कम करके 2 करोड़। ठीक है। अब इससे क्या होगा? सो दिस विल ऑब्वियसली एनकरेज मोर एंटिटीज टू एंटर इनटू द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्रीज। Moving ahead, wider investment universe. If I talk about the wider investment universe, SEBI has proposed allowing portfolio managers to invest. Now, SEBI has allowed or given a proposal that portfolio managers, they can invest in overseas listed equities. Overseas matlab outside India listed equities. They can invest in debt securities. They can invest in mutual funds overseas. They can invest in overseas unit investment trust. Second is to be listed domestic securities, मतलब जो IPO
होने वाला है, जो हम सुनते हैं कि दिस कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च आईपीओ, यू कैन इन्वेस्ट बिफोर दैट आईपीओ हैज बीन लॉन्च. Next is investment grade unlisted debt securities up to 10% of clients asset under management. मतलब क्या हुआ? If you want that you can invest, or if you want to invest clients funds into debt securities, but these debt securities are the unlisted debt security. Unlisted का मतलब सर ये listed नहीं है stock exchange पे, they cannot be traded on the stock exchange. In that case you cannot invest more than 10% of asset under management. अगर मेरा total पोर्टफोलियो साइज 50 लाख है तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट कैन नॉट गो अबव 5 lakhs. 5 lakhs is the limit, that is 10% of asset under management. Now greater flexibility has been given. What is that? Portfolio managers, they may use exchange traded derivatives with a total exposure of up to 1.25 times the client asset under management. क्या ये पॉइंट समझ आता आपको? Anybody can understand this point because this is the heart of this particular news, जहां पे मुझे लगता है कि most of the candidates will not be able to understand. So may I have a reply, guys? Do you guys understand this? Anybody? Anybody? नहीं, चलो मैं बताता हूं इसका मतलब क्या होता है. सर इसका मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजर जो है, he or portfolio manager is basically allowed to take derivative position. और डेरिवेटिव जो आपने परचेज किया या उसकी जो पोजीशन होल्ड की, सेल की या बाय की, सेल की या बाय की, उसका जो एक्सपोजर है, उसकी जो एक्सपोजर वैल्यू है, दैट शुड नॉट एक्सीड 125% ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट. तो असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? दैट इट इज बेसिकली द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज मैनेज्ड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. फॉर एग्जांपल मेरे पास 60 लाख के शेयर्स हैं, 30 lakhs के बॉन्ड्स हैं एंड 10 lakh कैश है, एंड आई हैव गिवन इट टू द पोर्टफोलियो मैनेजर. सो व्हाट इज the asset under management? That is 1 CR. 60 plus 30 plus 10, that is 1 CR. Now what is exchange traded derivatives? Exchange traded derivatives का मतलब वो derivatives which are available on stock exchange, which can be purchased, which can be sold from the stock exchange. We call it as exchange traded derivative. For example, futures, options, index futures, stock future, currency future, interest futures, they all are included in the same. What is exposure? Exposure means notional value. Exposure means notional value of the derivative contract, not the premium or the margin paid. मतलब अगर मैं कहूं कि you have paid 2 lakh rupees as margin, but the exposure, the risk is 20 lakhs. So that 20 lakh rupees is the exposure, and that should not be more than 1.25 times of the asset under management. That should not be more than 1.25 times of the asset under management. ठीक है जी, याद रहेगा. अब मान लो कि मेरा जो पोर्टफोलियो साइज है, इफ इट इज 1 CR, तो मेरे पोर्टफोलियो के अगेंस्ट जो डेरिवेटिव्स विच कैन बी होल्डेड वो कितने के हो सकते हैं? सो दैट कुड बी ऑफ 1.25 करोड़. नेक्स्ट इज चेंज इन द फी स्ट्रक्चर. सेबी हैज प्रपोज्ड फिक्स्ड मैनेजमेंट फी कैप. सेबी ने कहा कि भैया आपका जो मैनेजमेंट फी कैप है दैट शुड बी फिक्स्ड 2.5% ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट. दिस इज द कैप. इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे नीचे इट्स ऑल अबाउट योर नेगोशिएशन, वॉट एवर इट कैन बी डन. सो परफॉर्मेंस बेस्ड फीस और कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड अलाउड विद एक्सप्लिसिट क्लाइंट कंसेंट. की ऐसा भी हो सकता है कि सर हम आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, प्रॉफिट का 5% लेंगे, तो ये तो ज्यादा हो गया इससे, या इससे कम भी हो सकता है. सो दैट विल बी एक्सक्लूसिवली डिसाइडेड बाय बोथ क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर. लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस फिक्स्ड है, देन देयर इज अ कैप, एंड द कैप इज 2.5% of the asset under management. If I talk about the relaxation, sir, existing portfolio managers, they can launch mutual fund portfolio management services without separate registration. Relaxation in qualification and experience requirement फॉर प्रिंसिपल ऑफिसर. तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर की एक्सपीरियंस की और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स थी, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास कहना गलत होगा, मतलब इन द प्रीवियस क्लासेस व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 एग्जामिनेशन, उस समय
उस समय I have discussed this particular point that for portfolio management services, for portfolio management services, there was an earlier professional requirement that the individual should be either CA or maybe a CFA, MBA in finance, or a postgraduate qualification should be holding a postgraduate qualification in the relevant discipline, है ना. बट अब सेबी ने कहा कि भैया इसे रिलैक्स कर दो, अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड portfolio management services, you are allowed to hire on a more liberal format if you are hiring a principal officer. Certain operational requirements such as maintaining a dedicated dealing room may be eased. तो एक जो dealing room maintain किया जाता है by the other portfolio management services, that can also be eased under this particular announcement. तो government SEBI basically चाहता है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को भी मैनेज किया जाए सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन गेट बेटर रिटर्न, एंड दैट इज व्हाई दे हैव ईज्ड आउट और आई वुड से दे हैव सपोर्टेड द कंपनीज, द एंटिटीज टू सेट अप मोर एंड मोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अंडर द प्रपोज म्यूचुअल फंड ओनली portfolio management services, portfolio managers will be allowed to invest clients' funds only in, they will be allowed to invest clients' funds only in, so they will be allowed to invest in equity shares, no, unlisted equity shares, no, government securities, no, real estate, no. They will be allowed to invest in mutual fund schemes, exchange traded funds, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स. ऑब्वियसली ना, जब आपके पास है ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स, आपको अलाउड ही किया गया फॉर म्यूचुअल फंड स्कीम्स, यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, क्योंकि दिस इज ओनली म्यूचुअल फंड portfolio management services. If you're managing my portfolio which consists of mutual fund, you will be investing the funds in the mutual fund only. So answer is going to be B option. ठीक है जी, clear है. अगला question, this is your homework, take the screenshot. 1 2 3 4 and 5. Here you go, take the screenshot, give me the answers in the comment section. I will be checking them out in the next class. Moving on to the next news. The next news is Center plans fresh central public sector enterprises take sale through offer for sale. Through offer for sale. पहले समझते हैं कि है क्या. देखो यार, एक टर्म है which we call it as disinvestment. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का उल्टा. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट का उल्टा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी में मेरे 50% शेयर्स हैं, 50% किसी और के शेयर्स हैं. इन नियर फ्यूचर आई एम सेलिंग 10% of my shares to someone where I'm ready to dilute my shareholding, I'm ready to dilute my hold on the company. So this is what? So this is this investment. जब बनाई थी कंपनी तब जो पैसा लगाया था, that was investment. And today if I am taking out my money, that is basically known as disinvestment. And this disinvestment practice is very common. It is very common out there in the economy, but this disinvestment word is generally and more specifically used with respect to government. क्योंकि अगर मान लो मैंने आज इन्फोसिस का शेयर खरीदा, कल बेच दिया, अब तो रोज कहोगे डिसइन्वेस्टमेंट है, बट प्रैक्टिकली जो डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड है, इट गोज वेरी गुड विद गवर्नमेंट. सो इफ आई टॉक अबाउट गवर्नमेंट, सो वेन एवर गवर्नमेंट सेल और गवर्नमेंट डाइल्यूट इट्स शेयर होल्डिंग, when government dilute its shareholding from the government owned companies, we call that process as what? So we call that process as disinvestment. Now you must be wondering कि सर ये जो disinvestment है, क्या ये रियलिटी में होता? बिल्कुल होता. क्या ये रियलिटी में होता? मैं कहूंगा बिल्कुल होता. अब आप सोचोगे सर क्यों होता है, उसका क्या रीजन है? देखो, उसके कुछ डिफरेंट रीजंस हैं. इफ यू आस्क मी व्हाई डिसइन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड डिसइन्वेस्टमेंट, देन व्हाट विल बी माय आंसर. So if I talk about government, we all know that government budget is deficit.
गवर्नमेंट का जो बजट है दैट इज डेफिसिट, एंड डेफिसिट बेसिकली मीन्स एक्सपेंडिचर इज मोर देन receipts. So in this case, government needs to fulfill its expenditure. So government need funds, and in order to borrow the funds every time is going to be tough. So it's better government goes on with regular disinvestment. Government goes on with regular disinvestment. Second reason is second reason is we have also witnessed whenever a government company is converted into private, its efficiency increases. So that is also one of the logic by the government. And even if government is thinking of more liberal scenarios where government want that more and more private players should play in the market rather than government as a player and controlling the market. So in that case also government goes for disinvestment. लेकिन मानो या ना मानो बेसिक जो रीजन है दैट इज यही कि भैया डेफिसिट है, उसके लिए पैसा चाहिए, डेफिसिट को काउंटर करने के लिए, डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी है, ये जो हम डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी कोई आज की नहीं है। It is very old story of disinvestment, and this disinvestment story I would say this investment theory got more importance. It has got more importance during 1980s, 1990s. The reason was very obvious that India was witnessing a crisis, and during the crisis government was witnessing a tough time, and during that tough time, in order to arrange funds as much as they can, this disinvestment was done, or this disinvestment was taken into serious consideration. What I mean by the word serious consideration, so the serious consideration का मतलब ये है कि एक special department बनाया गया. There was a settlement, or there was a setting up of a special department, and this special department was whole and sole responsible for handling द डिसइन्वेस्टमेंट फॉर्मेट. कि भैया एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गवर्नमेंट ने कि भैया बहुत सारी डिसइन्वेस्टमेंट है, हम रोज रोज कैसे करेंगे, उसके लिए रोज रोज क्या कमेटी बनाएंगे, एक डिपार्टमेंट बना दो, दैट डिपार्टमेंट विल इजीली हैंडल द डिसइन्वेस्टमेंट. ठीक है जी, मान लिया सबने. अब इतने इतने पे गवर्नमेंट रुकी नहीं, गवर्नमेंट ने कहा यार डिपार्टमेंट छोड़ो, अब एक काम करो, इसी डिपार्टमेंट को कन्वर्ट कर दो मिनिस्ट्री में. दैट डिपार्टमेंट वॉज कन्वर्टेड इनटू मिनिस्ट्री, but later on that ministry was again converted into department. तो आज की डेट में if I say the story of disinvestment started from 1999, and in 2016 it ended up, I'll not say it ended up, लेकिन it got more formalized in the form of a department which is called as DIPAM, which stands for Department of Investment and Public Asset Management. Department of Investment and Public Asset Management. पहले जो department 1999 में आया था, that was Department of Disinvestment. It was converted into Ministry of Disinvestment. Then it was again converted into department, and now this department is renamed as Department of Investment and Public Asset Management, and it is operating under Ministry of Finance. इट इज ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, जब आप डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं और उसमें कुछ कैटेगरीज भी हैं. व्हाट ऑल कैटेगरीज आर दे? सर अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, वन वी कॉल इट एज माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने शेयर्स बेचे लेकिन मैनेजमेंट कंट्रोल आज भी गवर्नमेंट के पास है, मोर देन 51% शेयर होल्डिंग इज विद द गवर्नमेंट. सेकेंड वी कॉल इट एज स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब कि भैया गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग 51% से कम की है. गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड इट्स शेयर होल्डिंग बिलो 51%, and even government has transferred the management into the hands of the private players. गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर को पूरी कहानी सौंप दी. तीसरा है कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन. कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन का मतलब कि भैया अब गवर्नमेंट का नामो निशान ही खत्म हो गया. कंपनी 100% मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स है. इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट. इट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट फ्लोस. इज इट क्लियर? तो तीन तरह की डिसइन्वेस्टमेंट्स हैं, ये भी आपको याद रखनी होगी. तो सर अब आपने पूरी कहानी तो सुना दी, अब जो करंट स्टोरी है वो भी सुना दो. करंट स्टोरी भी सुन लो. करंट स्टोरी क्या है सर? ऑफर फॉर सेल. एज यू कैन रिमेंबर, ऑफर फॉर सेल वाज अ वर्ड व्हिच वाज रिटन. ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर्स in a listed public sector enterprises
थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, ऑफर फॉर सेल. तो व्हेन गवर्नमेंट sell its shares openly to the public through the through the stock exchange platform, that is known as offer for sale, and that is the fastest way to raise the funds. मान लो मेरी एक कंपनी है BSNL, उसके शेयर मार्केट में है, मैंने कहा शेयर मार्केट में बेच दो, लोग खरीद तो रही है शेयर, मार्केट में और बेच दो, पैसा आ गया, इससे इजी क्या होगा. सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टॉक्ड अबाउट. सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग another round of another round of minority stake sales in the listed central public sector enterprises. Minority matlab no shift in management, through offer for sale route to accelerate progress towards its 80,000 crore disinvestment target for 2026-27. तो कितना टारगेट है सर? 80,000 करोड़ का. कौन सा डिपार्टमेंट देख रहे हैं सर? DIPAM. इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है उन गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को जिसमें शेयर होल्डिंग 60% या उससे ज्यादा है. तो जिसमें शेयर होल्डिंग 60% से ज्यादा, कुछ शेयर बेच दो, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आज भी हमारे पास रहेगी, तो भैया माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट हो गई. तो इसमें हमारा जो शेयर मार्केट में हमने डी सर्कुलेट किए या डिसइन्वेस्ट किए, उससे हमारी जो एक्चुअल ओनरशिप है, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग राइट है, दैट विल स्टे विद द गवर्नमेंट. So unlike strategic or private, government is focusing on market based stake sales. तो government चाहती है कि market based stake का मतलब जो market में पब्लिक सेक्टर कंपनीज, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज बढ़िया चल रही हैं, जिनके शेयर्स की वैल्यू अच्छी है, जिनके शेयर्स बढ़िया मार्केट में लिक्विडेट हो रहे हैं, उन्हीं को बेचो, पैसा रेज करो, सिंपल है, क्यों ज्यादा टेंशन लेनी. तो इस बार का जो टारगेट है 2026-27 का, वो है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज 80,000 करोड़ with the help of your disinvestment. So DIPAM is evaluating listed central public sector enterprises with government shareholding above 60% for the minority stake which has been discussed. की हाइलाइट्स में सर, ऑफर फॉर स्केल मैकेनिज्म, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की मदद से डायरेक्टली पब्लिक को ये शेयर्स बेचे जाएंगे, एंड प्रेफरेंस विल बी गिवन. प्रेफरेंस इज गिवन टू द कंपनीज जिनके पास एडिक्वेट पब्लिक फ्लोट है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स डिमांड है, या फिर जो कि अट्रैक्टिव मार्केट वैल्यूएशन पे मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें प्रेफर करो ताकि जल्दी बिक जाए. Earlier in the financial year 2026-27, government successfully completed offer for sale. गवर्नमेंट ने पहली बार नहीं, पहले भी कर चुकी है गवर्नमेंट इसी फाइनेंशियल ईयर में. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नॉट RBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. कोल इंडिया लिमिटेड, NHPC, NLC इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कोचीन शिपयार्ड, दीज आर दी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. इसके शेयर बेच के गवर्नमेंट ने लगभग 20,000 करोड़ के आसपास फंड रेज किया है. लास्ट 2025-26 में इट वाज 16,000 करोड़, 2024-25 में इट वाज 30,000 करोड़, एंड 2020 और अगर मैं 2025-26 में असेट मोनेटाइजेशन रिसीट्स की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं. बस दो ही फिगर्स हैं, वो आप याद रखिएगा, और इस बार की फिगर याद रखिएगा. टारगेट क्या है सर? टारगेट है 2026-27 का 80,000 करोड़. टारगेट तो पिछले साल भी बड़े ही थे, लेकिन पूरा हो नहीं पाया, और सच बताऊं तो ज्यादा जरूरत नहीं थी. लेकिन इस बार कहानी टाइट है, गवर्नमेंट की कहानी इस बार टाइट है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो इस बार गवर्नमेंट विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट to raise or to achieve its target so that government has the liquidity to manage the funds. अब जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि इंडिया में जर्नी कैसे शुरू हुई, तो याद रखना 1990s, 1991 आफ्टर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो वहां पे गवर्नमेंट को कहा गया कि अपनी कंपनीज के शेयर बेचना शुरू करो. 1999 to 2004 under the Atal Bihari Vajpayee government, India adopted the policy of strategic disinvestment. That means जो sick companies थी, sick companies means the companies which were not doing well, government owned companies, those companies were sold to the public. The management was also transferred to the public. Then in 2004 to 2014 there was a slowdown. Strategic disinvestment slowed down because 2004 to 2014 ये वो टाइम है जहां पे इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा ग्रो की है. And if your economy is growing well, then there is no need to raise the funds through disinvestment. So if there is no need to raise the funds through disinvestment, it's quite obvious that your disinvestment will slow down.
Then we have 2014 onwards. Now it is market-based disinvestment, which means government adopted multiple methods to accelerate disinvestment. और government multiple methods के जरिए disinvestment कर रही है. It can be through offer for sale, as I said, through stock exchange, या फिर government is issuing the shares openly to the public for the very first time, IPO, or maybe through exchange traded fund, maybe through buyback of shares, maybe through strategic disinvestment and whatnot. These are the different methods through which the funds can be raised. Okay? So these are the points which you need to remember. 2021 में नई पॉलिसी आई, that is new public sector enterprises policy. The government announced a new policy to redefine the role of public sector. So strategic sector will have limited number of, तो यहाँ पे कहा गया कि जो strategic sectors हैं, important sectors हैं, they will have limited number of central public sector enterprises under government. जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बोला जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बोला जा रहा है कि लिमिटेड कंपनीज होनी चाहिए. हर एक सेक्टर में अनलिमिटेड इतनी ज्यादा कंपनीज की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दे आर impacting the existence of each other, so there should be limited count. CPSC is non-strategic sector. CPSC in the non-strategic sector मतलब वो कंपनीज जो कि नॉन स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, या तो उनको प्राइवेटाइज कर दो, या मर्ज कर दो, या सब्सिडरी बना दो किसी की, या फिर क्लोज कर दो. वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट विल try to hold its public sector companies, or hold its companies only and only where, sir, only and only in the strategic sectors, not in the non-strategic sectors. गवर्नमेंट ने एक और नाम दिया, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि भैया हमें बिजनेस नहीं करना, हम तो दूर बैठ के सिर्फ बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं. तो उसके लिए हमने ये नई पॉलिसी लाई है. 3 तरह की मेथड्स, स्ट्रैटेजिक में minority disinvestment, strategy disinvestment, and complete privatization. I have already explained you. Yes, they also follow. वहां पे आ जाता है स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो वो इनका डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये करते हैं सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट. दैट इज अ पॉइंट. गॉट इट? चलो क्वेश्चन सॉल्व करें. Let's try to solve a question. The question is now on your screen. Government has recently decided to undertake fresh minority stake sales in the selected central public sector enterprises through offer for sale. In this context, the stake sales are intended to help the government achieve its 80,000 crore disinvestment target. That is true. Under the offer for sale route, government transfer management control. No, sir. Offer for sale का मतलब you are selling your shares through share market. You are selling the shares through share market, but it doesn't mean that you are transferring the management. Government plans to retain the majority ownership and management control. That is true. So answer to this particular question will be what? Sir, answer is going to be C option. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ आ गया पॉइंट. चलो, here you go with the next question. Take the screenshot. You have 5 seconds. It's 1, 2, 3, 4, 5. Take the screenshot, guys, quickly. Take the screenshot. Done. Chalo. So next news we will be covering in the next class. It's very important. एक बार पढ़ के आइएगा. अगर आप पढ़ के आएंगे तो मेरे लिए easy होगा इसे समझाना. RBI relies more on forward market to defend the rupee. RBI कैसे रुपी को डिफेंड कर रहा है उसके बारे में मैं अगली क्लास में जरूर बताऊंगा. अभी के लिए इस न्यूज को इंटेंशनली होल्ड कर रहा हूं. आई वांट यू गाइस टू रीड इट. आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you so much for joining, guys. We'll catch you in the next session. Already your RBI Grade B 2027 batch is live on Exam.nom platform. Do join the batch. Enjoy flat discount 30% by using the code RBI 2027. फाइनेंस ही उसमें चल रहा है. फाइनेंस में आज हम इन्फ्लेशन खत्म करने वाले हैं, और कल इन्फ्लेशन की डिस्क्रिप्टिव क्लास भी होगी इन द पेड कोर्स. इफ यू आर अ पेड स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट to join our Telegram channel, and don't forget to watch this current affairs session, which is going to help you a lot in understanding the financial concepts in much detail. Thank you so much for joining. Good luck. See you soon. Bye bye. Take care. God bless you all.